Okay, good morning everyone. Welcome to your computer class. We have started a new chapter in the previous class, which is MS Word. In that, we have studied about MS Word 2010. Okay, so this we have already done. Now, today we will learn how to enter and how to select the text in a document. Okay, so let's begin. Now, selecting a text in a document. Before performing any task in Word, you must select the text you want to work with. Selected text appears highlighted on the screen. For example, you have written a paragraph and you want certain words in that paragraph to be highlighted, to be bold. ठीक है, for that you have to select the word, that particular word first from that paragraph. Okay, then that is known as selecting. On how and how do we select any word, this we will see. ठीक है, whenever you select any word, that word is highlighted on the screen. Highlighted मतलब it pops up, उसका जो कलर है it somewhat changes, and it tells you that the word which is in different color, that word has been highlighted. And what are the steps? The first step is selecting a word. Double click the word you want to select. For example, in front of you I want to select the word thirsty. ठीक है, then I will double click that word, double click on that word. ठीक है, the word will be selected. As soon as I will double click the word will be selected. To deselect text, click outside the selected area. If you don't want to select the word which you have already selected, you want to deselect that word. ठीक है, then what you have to do, in the empty area or in the area where there is no text is written, you will just click on that एरिया. ठीक है, जैसे ही आप उस एरिया पे क्लिक करोगे, जो आपका सेलेक्टेड वर्ड है वो डी सेलेक्ट हो जाएगा. दिस इज द वे हाउ यू सेलेक्ट अ वर्ड. फॉर नाउ इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ सेंटेंस, द कंप्लीट सेंटेंस you want to select, you will have to press and hold the control key from the keyboard. There is a control key, CTRL here stands for control. This is a key which is there on your keyboard. You have to press and hold the control key. While holding the control key, click the sentence you want to select. uh, from one hand of the finger you will press the control key on the keyboard, or and uh, uh, you will while holding the key you will select the word from the mouse, the sentence which you want to select. उसको आप drag करके select करोगे, then your sentence will be highlighted, which will show you that you have selected this sentence. Okay, now how will you select a paragraph? Same is the process. You have to place your mouse pointer over the paragraph. जहाँ से आप अपना paragraph choose करना चाहते हो for selecting, you have to keep your mouse pointer there. वहाँ से you will select and drag your mouse pointer uh, till the word you want to select the paragraph. Then quickly click 3 times to select the paragraph. Then you have to click 3 times. How many times? 3 times to select the paragraph. The whole paragraph which you have selected, which you have dragged from your mouse pointer, will be selected. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस हाउ यू सेलेक्ट अ पैराग्राफ. नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग एनी अमाउंट ऑफ टेक्स्ट. एनी अमाउंट ऑफ टेक्स्ट मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा कि कैसे हम एक वर्ड को सेलेक्ट करते हैं. उसके बाद हमने देखा कि हम एक सेंटेंस को कैसे सेलेक्ट करते हैं. थर्ड हमने देखा कि हम एक पैराग्राफ को कैसे सेंटेंस सेलेक्ट करते हैं. बट इफ़ यू डोंट नो कि हमें एक पैराग्राफ, एक वर्ड, एक सेंटेंस को सेलेक्ट करना है, हमें एनी अमाउंट मतलब कितने भी लाइन्स को सेलेक्ट करना है, देन व्हाट विल वी डू? वी विल प्लेस आवर माउस पॉइंटर ओवर द फर्स्ट वर्ड यू वांट टू सेलेक्ट. जो भी आपको फर्स्ट वर्ड सेलेक्ट करना है उस पर यू विल कीप योर माउस पॉइंटर, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द टेक्स्ट यू वांट टू सेलेक्ट. You have to just first of all place your mouse pointer at the place from where you want to select. then आपको drag करते जाना है जहाँ तक you wish to select the page. ठीक है, it can be a sentence, it can be a paragraph. Okay, there is no limit to it. That is why in the heading it is said that selecting any amount of text. So this is the way in which you will select a text in your document. Okay, now what is formatting text? Formatting, the word formatting means what? Let us see. Formatting means making any changes to the text and document so that it should look attractive and beautiful. जैसा हम अपनी कॉपी में वी यूज़ टू अंडरलाइन दी वर्ड्स, वी यूज़ ब्लैक एंड ब्लू कलर्स,
we use other sketch pens so that our copy, our work looks presentable, it looks good. The same thing can be done in the computer, in the word file as well. How? थ्रू दी फॉर्मेटिंग. ठीक है, द ऑप्शन इज फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अपनी फाइल में चेंजेस करना, अपने टेक्स्ट में, अपने लिखने के तरीके में, इसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, सो दैट कि जो हमारा फाइल है, हमारा डॉक्यूमेंट है, इट लुक्स अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल. You can format text by modifying. Modifying मतलब होता है to make changes. The word modify means to make changes. The font. ठीक है, now what is font? Font is the style in which you write the document. जिस स्टाइल में हम अपने font को लिखते हैं. ठीक है, you have observed that many people use cursive writing, many people use straight writing. तो that is known as font. ठीक है, तो किस फॉन्ट में हम अपने टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, हमारे फॉन्ट का साइज़ क्या है, बिगर है या स्मॉलर है, दैट इज़ ऑल्सो मेंशन टू यू इन नंबर्स फॉर्म. 2, 4, 6, 8, 12, 24. दिस इज़ द फॉन्ट साइज़ कि आप कितना बड़ा लिखना चाहते हो अपनी वर्ड फाइल को. देन द कलर, किस कलर में आप लिखना चाहते हो, दैट ऑल्सो यू कैन चूज. मेकिंग इट बोल्ड, उसको हाईलाइट करना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो. इटैलिसाइज, इटैलिसाइज मतलब होता है कर्सिव में लिखना, इटैलिक में लिखना. Changing the alignment of the text etc. You can change the alignment of the text also. मतलब आप लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, या अलाइनमेंट वर्ड मीन्स बॉर्डरिंग, या किस फॉर्मेट में आप अपना जो टाइप टेक्स्ट है उसको लिखना चाहते हो, दैट इज़ योर अलाइनमेंट. नाउ वी विल लर्न द डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट. ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ मेनी वेज आर देयर टू फॉर्मेट द टेक्स्ट. चेंजिंग फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट. Font is the way in which you write the type your document file, the text in which the form is written. You can change the font style of the text to enhance the appearance of the document. आप अपने font style को change कर सकते हो. enhance मतलब होता है increase करना. अपने appearance मतलब होता है outlook. अपने document file की appearance को, उसके outlook को increase करने, enhance करने के लिए we can change the font style. Now for that you have to select the text you want to change to a different font style. जो भी आप अपना सबसे पहले you will select your text जिसका font size you want to change. ठीक है, first of all आप you will select the text. select कैसे करना, the previous method which we have just studied, उसी process से you will select. Okay, now then you will click on home tab in the ribbon में there is a home tab, you will click there. Click on the drop down arrow of the font style. Then you will click on the drop down arrow of the font style. वहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल के, जैसे एरियल, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, these are the font style which are offered to you by the computer. From there you can choose your desirable font size. Then you will click on the font you want to choose. आप अपने वहाँ से font को choose कर सकते हो. As soon as you will choose your desired font, जो आपका selected text है वो उस form में change हो जाएगा. Okay, now the text you have selected is changed to the new font. जो आपने text को select किया, you can select the complete page. Also you can select a particular word. दोनों as you wish. You will change the, you will select the text according to your choice. Then you will choose the font style according to your wish. Okay, ठीक है. As soon as you will select the font size from this drop down menu, जो आपने text select किया है वो भी उस जैसा भी आपने choose किया है उस font में change हो जाएगा. To deselect text, click on any area outside the selected text. अगर आप deselect करना चाहते हो, you don't want the formatting to be done, फिर आप किसी भी एरिया पे जहाँ पे कोई भी written work नहीं लिखा गया, कोई भी typing नहीं की गई, वहाँ पे जाके you can click. Then your selected part will be deselected. A font is a typeface. I'm reading the update your knowledge. A font is a typeface that defines the shape of the character. Example, Times New Roman is a typeface. It is a method of writing basically कि जो आपका character है. Characters are what in computers, the letters of English are known as characters. Characters को किस shape में हम define करें, that is your font. Okay, Times New Roman is an example. Calibri is an example. Arial is an example. Arial Black is an example. All these are the examples of the font size which are offered to you by the computer. So this is it for this class. Further we will continue in our next lectures. Thank you everyone.